अस्सलाम वालेकुम। आज का बुक रिव्यू है स्लीप मेडिसिन के बारे में। सो व्हाट इज स्लीप मेडिसिन? स्लीप मेडिसिन एक स्पेशलिटी है मेडिसिन की एंड दैट इज डिवोटेड टू द डायग्नोसिस एंड थेरेपी ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड डिसऑर्डर्स। एमबीबीएस लेवल के ऊपर इट इज़ बेयरली टेस्टेड, इसका कंटेंट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट ऑलमोस्ट एंड रैंडमली कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं रिगार्डिंग ब्रेन वेव्स ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ स्लीप, लेकिन generally, if you're an MBBS student, you can just totally not study this. तो अगर टीचर के नोट्स हैं पास पेपर्स में कुछ एक एक आध सवाल है तो बस वही सफिशिएंट है. However, if you decide to pursue this specialty, so here are a few books that we can discuss. So the first book is Handbook of Sleep Medicine. Now this is a pocket-sized handbook. इसमें practical guidance है, इसमें evaluation और management of sleep disorders are mentioned. इसमें एक broad range of topics are covered in neurology, pulmonary medicine, psychiatry, pediatrics. Print is a little bit small to read, थोड़ा annoying है ये, लेकिन हर डिजीज और कंडीशन इज वेल ब्रोकन डाउन into definition, pathology, epidemiology, classification, and treatment. I definitely recommend this one. The next book is Concise Sleep Medicine Handbook. इसमें हाई यील्ड इंफॉर्मेशन है और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी है. आई recommend it. तो इजी रेफरेंस गाइड है, क्लिनिकली रेलिवेंट है, करंट AASM मैनेजमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से है. रीसेंट आर्टिकल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं. एडवांसेस इन स्लीप मेडिसिन आर इंक्लूडेड, FDA अप्रूव्ड न्यू मेडिकेशन आर ऑल्सो मैंशनड. तो इट्स वेरी रेलिवेंट इन टूडेज डे एंड एज. उसके अलावा practical approaches are there in the management of some of the most commonly seen sleep problems like insomnia, and each chapter ends with review questions. So that's great, you can test yourself. Then this is a cute little book called Sleep Medicine Made Ridiculously Simple. You know by now if you've seen my other videos, मुझे ये series बहुत अच्छी लगती है, तो I'm very biased. तो इट्स अ क्यूट इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू बुक है. आपके इंटरेस्ट को बिल्ड करने के लिए है. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ टेक्स्ट बुक, but I am totally recommending this. It's easy to read. It emphasizes pathophysiology, diagnosis, and treatment of the most common sleep disorders encountered in clinical practice. इसके अंदर यूजफुल चार्ट्स हैं, स्केल्स हैं, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्पेशलिटीज़ जिनको एक क्विक सा ओवरव्यू चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए. तो लाइक पीपल हु आर इन साइकाइट्री, न्यूरोलॉजी एंड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, उनको ये बुक अच्छी लगेगी. अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन इज़ AASM. इनकी वेबसाइट पे आप जाके गाइडलाइंस देख सकते हैं. फिर आ जाती है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ स्लीप मेडिसिन. ये भी बहुत अच्छी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रैक्टिकल है, कंसाइज है और क्विक रेफरेंस के लिए अच्छी है. स्लीप डिसऑर्डर्स देखने के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्पफुल है. इसमें एक ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स आर कवर्ड और इवन रेयर स्टफ इज़ ऑल्सो कवर्ड, एंड आई रिकमेंड कि ये आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस स्पेशलिटी को परसू कर रहे हैं. देन दिस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्लीप मेडिसिन. इसमें एविडेंस बेस्ड कंटेंट काफ़ी है और आप अच्छे इन्फॉर्म्ड क्लिनिकल डिसीजंस ले सकते हैं. बोर्ड एग्जाम्स के लिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल, अप टू डेट है और इसमें टॉपिक्स बहुत सारे कवर्ड हैं जैसे कि स्लीप एपनिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ स्लीप मेडिसिन, dental sleep medicine, genetics, circadian disorders, geriatrics, women's health, cardiovascular disease, and occupational sleep medicine. I thought these topics were really cool, so I mentioned them here. तो आपकी मर्जी है, आपने लेनी है या नहीं. मैं स्ट्रांगली रेकमेंड तो नहीं करती, लेकिन अच्छी किताब है. Then there's Principles and Practice of Sleep Medicine. It's a good book. बड़ी है, इसमें भी एविडेंस बेस्ड कंटेंट काफ़ी है और इसके साथ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं. इसके अंदर भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं लाइक स्लीप इन इंटरसेक्स एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, स्लीप टेलीमेडिसिन, remote PAP adherence monitoring, sleep and the menstrual cycle, as well as increased coverage of treatment and management of pediatric patients. Again, these were very cool topics, so I thought to mention. So, of course, it is not recommended unless you are seriously, specializing in this. तो ये बहुत डिटेल्ड किस्म की किताब है. तो अगर आपने जस्ट एक बेसिक आइडिया करना है तो ये बेशक मत लें. Then there's Atlas of Clinical Sleep Medicine. स्टूडेंट फ्रेंडली है, इजी टू रीड है, इजी टू अंडरस्टैंड है. इलस्ट्रेशंस अच्छी हैं. इसमें फिजियोलॉजी, क्लिनिकल, मॉर्फोलॉजिकल, इन्वेस्टिगेशनल एस्पेक्ट्स हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के जो कि डे टू डे प्रैक्टिस में इनकाउंटर होते हैं. इट्स अ गुड रिसोर्स फॉर स्लीप प्रैक्टिशनर्स एंड टेक्नीशियंस इन द लैब एज वेल.
इसमें अप टू डेट ड्रग थेरेपी है, लेटेस्ट ड्रग्स मेंशन्ड हैं, और इवन जो क्लिनिकल ट्रायल अभी फेज में गुजर रहे हैं उनको भी मेंशन किया हुआ है। करंट जो AASM गाइडलाइंस हैं, स्कोरिंग गाइडलाइंस और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसमें शामिल है। इसमें कोरिलेशन भी शामिल है, नॉर्मल और एबनॉर्मल स्लीप रिलेटिव टू अदर हेल्थ इश्यूज लाइक स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर, which I think is really cool. Then it also provides numerous online resources, including patient interviews and sleep lab videos and polysomnogram fragments. देन देयर इज़ रिव्यू ऑफ स्लीप मेडिसिन। तो ये भी अच्छी बुक है। इसमें इस बुक को बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला सेक्शन है उसमें नॉर्मल स्लीप को रिव्यू किया हुआ है। दूसरे के अंदर एक सिनॉप्सिस है स्लीप डिसऑर्डर्स, और थर्ड वाला जो है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस हैं। अच्छी है, इमेजेस अच्छे हैं, डायग्राम अच्छे हैं। इसमें पैथोफिजियोलॉजी पे कोई इतना जोर नहीं दिया हुआ क्योंकि ये ज़ाहिर एक रिव्यू बुक है तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ये बुक हेल्पफुल लगेगी। थोड़ी थिक बुक है लेकिन अच्छी चैप्टर्स हैं। एंड इसमें टॉपिक्स को डिस्कस करके उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, तो इट्स गुड अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं साथ साथ। तो आई रिकमेंड दिस वन। देन देयर इज क्रिगर स्लीप मेडिसिन रिव्यू, ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। तो ये भी अच्छी है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इसका क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है, अप टू डेट है और आपकी मर्जी है, इट्स ऑप्शनल टू बाय। देन देयर इज फंडामेंटल्स ऑफ स्लीप मेडिसिन, ये भी अच्छी है, एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, थोड़ी डिटेल्ड है लेकिन इजी टू रीड है, एंड आई रिकमेंड दिस वन। स्लीप मेडिसिन एसेंशियल्स इन रिव्यू, ऑथर का नाम मेरे से नहीं बोला जाएगा तो आप खुद ही पढ़ लें। तो इस बुक का ये कि इसमें कुछ एरर्स हैं, क्वेश्चन बैंक भी बहुत अच्छा नहीं है, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो नहीं रेकमेंड करूँगी मैं। लेकिन एक ओवरव्यू के लिए अबाउट स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर्स अच्छी है। इसमें डायग्नोसिस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट डिस्कस किए गए हैं। इसमें डेमोग्राफिक्स भी हैं, कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी भी कवर हुई हुई है और वेरिएंट्स हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के। ऑल्सो इसके अंदर रेफरेंसेस भी हैं फॉर एवरी सबसेक्शन, तो अगर आप फर्दर रीडिंग करना चाहते हैं तो यू कैन सी दैट। देन देयर स्लीप डिसऑर्डर्स मेडिसिन, सुधांशु चक्रवर्ती, साउंड्स इंडियन। राइट, सो आई थिंक सो। खैर ये भी कॉम्प्रिहेंसिव है, अप टू डेट है, थोड़ी बेसिक है, तो आपकी मर्ज़ी है आप लेना चाहें तो। बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड नहीं है लेकिन अच्छी किताब है। देन देयर स्लीप मेडिसिन पर्ल्स, रेजिडेंट्स को ये बुक बड़ी पसंद आती है। इसके अंदर केसेस हैं और साथ क्वेश्चंस हैं, एट द एंड उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। कुछ लोग इसको बाइबल ऑफ स्लीप मेडिसिन भी कहते हैं। ये बड़ी एजुकेशनल और अप टू डेट है विद AASM गाइडलाइंस। रेजिडेंट्स और लैब टेक्स दोनों को ये बुक सूट करती है और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन। So yeah, if you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel, and follow me on my Instagram and Facebook, where I post medical content every day and I post updates about my channel. So if you're interested in that, go ahead, and I'll be back with another video. Allah Hafiz.